हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं मेरी ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो आप वो जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमने जैसे पिछली दो दो वीडियोस में देखा। फर्स्ट हमने एक लीनियर इक्वेशन की जनरलाइज्ड इक्वेशन देखी विच इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। फिर उसके बाद हमने उसका देखा कि हम उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, राइट। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज सेक्शन 4.4, राइट। इन एनसीईआरटी अभी आप देखेंगे तो हमेशा सेक्शन 4.1 जो होगा, राइट, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। तो उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, करेक्ट। अगर हम 4.4 सेक्शन कवर कर रहे हैं तो इसकी एक्सरसाइज होगी 4.3, राइट। वीडियोस में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 हम सॉल्व करेंगे व्हेन वी डिस्कस सेक्शन 4.4, करेक्ट। अभी हम सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले उसने एक एग्जांपल ले रखा है विच इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, राइट। दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, राइट। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने एक आपको हिंट तो दे दिया था हम कैसे एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, किसी भी लाइन की ग्राफ को, राइट। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट। ये भी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करा था। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 है। मैं यहाँ पे इसको एक बार प्लेन ड्रॉ करता हूँ अपना, राइट। दिस इज माई x axis, this is my y axis, let's say this is 0 0 origin, right. This is 1 comma 0, I just represent it as 1, right. 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 1 2 3 4 5 6 7 8, okay. 8 2 3 4 5 6 7, okay. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और इस कोऑर्डिनेट पे काटेगी। फॉर एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस वी पुट y इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा था। पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन द अबव इक्वेशन इट गिव्स, that means x equals to 6. One of the solution is it cuts x-axis on 6 comma 0, right here, right. Now we will go and see कि ये y axis पे किस coordinate पे काटती है। Intersection with y axis, right. On y axis we have x equals to 0, so we will put x equals to 0 in this equation. X plus 2y equals to 6. We'll divide both the sides by 2, y equals to 3. It will cut y axis on 0 comma 3, right here. दो पॉइंट्स मिल गए हैं हमारे पास। हम चाहें तो इसके और भी इक्वेशन और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बट दो पॉइंट्स आर इनफ, राइट। एक हम टेबल बना लेते हैं और चेक करेंगे कि जो बाकी सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। एक्स वाई, सो वी हैव एक्स इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3। हम एक और चीज़ देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 के लिए हम देख लेते हैं, राइट। बट लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास ग्राफ आ चुका है, राइट। दिस विल बी माई x plus 2y equals to 6, करेक्ट। when x equals to 1, हम एक और देख लेते हैं इसका। x plus 2y equal to 6, we put x equals to 1 plus 2y equal to 6. Subtracting 1 from both the sides will give me y equal to 6 minus 1, that is 5. Now divide both the sides by 2, so that will give me y equals to 5 by 2 or 2.5. When x equals to 1, y is 2.5, correct. 2.5, ओके। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया है, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। वी हैव वन मोर एग्जांपल विच सेज, दिस इज एग्जांपल नंबर 5, right. It says given the point 1 comma 2, so we have 1 point
1 comma 2. Find the equation of a line on which it lies. How many such equations are there? So हमें बताना है कि एक ये मेरे पास कोई पॉइंट है 1 comma 2, लेट्स से ये मेरे पास एक पॉइंट है which is 1 comma 2, right? Now we have to find out equation of a line passing through this point, right? सो हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था अपनी पिछली वीडियोस में, जहाँ पे हमने कहा था कि एटलीस्ट एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक स्पेसिफिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, राइट? यहाँ पे अभी बट हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है। वो किस लिए बोला था? बिकॉज आप एक पॉइंट के थ्रू भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट अब आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये वाली लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है, राइट? ये वाली लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है, ये भी पास कर रही है, ये भी पास कर रही है, करेक्ट? ये भी पास करेगी. So there can be infinite number of lines which can pass through just one point. But if you specify एक और point, correct? This one. So then only one line can pass through 2 points, right? So इसकी बहुत सारी lines की equation हो सकती हैं which pass through these 2 points, right? So हम एक general देखते हैं, अगर हम इन दोनों numbers को add कर दूँ, right? So x plus y equals to 1 plus 2, 3, right? Let's say एक point दे रखा है, अगर let's say I will go and do a subtraction operation, right? So 1 minus 2 will give me -1. So we can write x minus y equals to -1, right? और यहाँ पे हमें दिख रहा है this is 1, this is 2, so 2 times y equal to x, right? So x equals to 2y. Sorry. So 2 times x equals to y, right? So 2 times x equals to y, or we can say y equals to 2x, right? So ऐसे बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास होंगी. हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, राइट? So which is x plus y equals to 3, x minus y equals to -1, 2x equals to y, and y equals to 2x, right? अब हम आगे बढ़ते हैं. Now it says draw a graph of x plus y equals to 7. So this is example number 6. It says we have to draw graph of x plus y equals to 7. ये तो और भी आसान है, right? Because this is my 0 0, right? Y axis, x axis, right? 1 2 3 4 5 6 7 8. This is 7, correct? So सबसे पहले हम देखते हैं ये x axis को किस पॉइंट पे काटेगी. That means y equals to 0, right? Substitute y equals to 0, right? So on substituting y equals to 0, it becomes x equals to 7, right? So it will cut x axis on 7, 0. Similarly हम देखेंगे कि ये y axis को कहाँ पे काटेगी. So we will substitute x equals to 0 there, right? So when we put x equals to 0, this equation becomes, right? So it will intersect y axis on 0, 7 points. So we have these 2 points. This is 7, 0. This is 0, 7, right? So this is my line. This line's equation is x plus y equals to 7. Correct? अब आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल है इसमें which says example number 7. It says you know that the force applied on a body is directly proportional to acceleration. So force applied is directly proportional to acceleration, right? Then write an equation to express this situations and plot the graph of the equation, right? So we have to write a linear equation. So when we remove this proportional sign, right? So we introduced a constant here. Let's say the constant is k into a, right? So if we take f as y and a as x,
right? So my equation is y equals to kx, right? And then it says, so ये उस टाइप की इक्वेशन है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था y equals to mx टाइप की इक्वेशन, right? Here m is equals to a constant, k is also a constant, right? So y equals to mx हमें पता है it will pass always through the origin, right? This is my x axis, this is my y axis, तो ये कुछ इस तरह की लाइन होगी, correct? But if we specify any value of this m, let's say जो हमें NCERT में दे रखा है वो इन्होंने दे रखा है y equals to, इन्होंने एक constant की वैल्यू ले रखी है 3, so we will also take 3 here. आप कुछ भी ले सकते हैं 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन में डिफाइंड होगा, राइट? सो y equals to 3x, so हम इसको जब प्लॉट करेंगे so that will also pass through this center. So or we can write this equation as y minus 3x equals to 0. Okay, now we will substitute x equals to 1 here, so we will get y as 3, or I can solve it as like y minus 3 times 1 equals to 0. Add 3 on both the sides, so we'll get y equals to 3. So first point is when x equals to 1, y value is 3, right? Now put x equals to 2, we get y minus 3 times 2 equals to 0, or this will give y equal to 6. So when x equals to 2, y's value is 6. Okay, so ये points को हम नोट भी कर सकते हैं. This is 1,3, ये वाला point is 2,6, right? So this is the representation of this linear equation, the graphical representation. Okay, presentation, right? अब आगे चलते हैं. Then it says we have example number 8 now. Example number 8 says for each of the graphs given in figure 4.5, select the equation whose graph it is from the choices given below. Okay, so first part करते हैं A for the figure 4.51. so मैं एक बार 4.51 यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. This is 4.51. Okay, so equation कुछ इस तरह से दे रखी है. So the line is passing through origin, right? Origin 0,0, and it is also passing through a point 1,2. So x is 1, y is 2, right? So अब हमें बताना है कि इन चारों में से इस लाइन की इक्वेशन क्या है. So options हमें दे रखे हैं. First is x plus y equals to 0. Second option is y equals to 2x. Third option is y equals to x. And fourth option is y equals to 2x plus 1. एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, because this line is passing through center, so it will be of the form y equals to mx, right? So 4 तो हम देख के ही eliminate कर सकते हैं without solving, right? Because it is not of the form y equals to mx. This line is passing through origin, right? अब हम सेकेंड और क्लियर करने के लिए, बिकॉज ये भी y इक्वल्स टू mx की फॉर्म में है, ये भी y इक्वल्स टू mx की फॉर्म में है. हियर m इक्वल्स टू 2, हियर m इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू x को हम ऐसे लिखते हैं ना, y इक्वल्स टू 1 into x, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो y इक्वल्स टू माइनस x, राइट? हियर m इक्वल्स टू माइनस 1, राइट? सो अब इन तीन में से कैसे डिसाइड करेंगे, बिकॉज हमारे पास ये 1,2 पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, दैट मीन्स 1,2 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ this line, right? So we'll try and substitute 1,2 in these three equations and see किसका ये solution है, right? So if I put 1,2 here, 1 in this line, 1 plus 2 equals to 0, which is not, right? Then we'll put y is 2, x is 1, so this satisfies, right? So this is my answer here, y equals to 2x. So this line basically is y equals to 2x, right? अब हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है. फॉर पार्ट बी वी हैव फिगर 4.52. सो मैं पहले लाइन की इक्वेशंस लिख देता हूँ.
it says x plus y equals to 0, y equals to 2x, y equals to 2x plus 4, then we have y equals to x minus 4, right? And यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ एक. So this is my x axis, this is my y axis, and so the line is like this, correct? It passes through minus 2 comma 0, and it also passes through 0 comma 4, okay? And it also passes through another point 1 comma 6, okay? सो एक तो बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है बिकॉज हमें पता है ये एक्स एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रही है. सो हम देख के बता सकते हैं क्या, बिकॉज एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करेगी सो देयर वाई विल बी इक्वल्स टू 0, राइट? सो अगर मैं वाई को 0 डाल दूँ इन चारों इक्वेशंस में, अगर आप देखते हो, इफ आई पुट वाई इक्वल्स टू 0, राइट, सो हियर एक्स बिकम्स 4, which is not a solution. X तो -2 होना चाहिए, right? When I put y equals to 0. If I put y equals to 0 in this equation, right, y equals to 0, 2x plus 4, right? Subtracting 4 from both the sides. So here dividing by 2, x equals to -2, right? So एक तो मुझे अभी ये लग रहा है, correct? Equation, because हम बाकियों में भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. y को 0 डाला, राइट, 2x, सो दिस विल गिव मी x इक्वल्स टू 0. दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन. यहाँ पे हो जाएगा y को अगर मैं 0 डाल दूँ सो x विल ऑल्सो बिकम 0, राइट? सो हमने सिर्फ एक पॉइंट से ही सेटिस्फाई करके देख लिया, राइट, कि ये x एक्सिस को -2 कॉमा 0 पे कट कर रहा है. सो दिस इज माई करेक्ट आंसर. दूसरा तरीका क्या है कि आप ये सारे पॉइंट्स को हर एक इक्वेशन में डाल के देखेंगे, उससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा. बेस्ट चीज़ है जब आपको इंटरसेक्शन ही दे रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, यू जस्ट गो फॉर दैट फर्स्ट, राइट? क्यों एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे वाई इक्वल्स टू 0 हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं हर एक इक्वेशन में, राइट? सो हमें दिख गया सीधा -2 कॉमा 0. लेट्स से कोई और ऐसी इक्वेशन होती जहाँ जो जो ऑल्सो दैट लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू -2 कॉमा 0, फिर हम एक्स एक्सिस को भी देख लेते, राइट? सॉरी, वाई एक्सिस को भी देख लेते कि वाई एक्सिस को वो दो इक्वेशन लेट्स से दो मैच कर रही होती. सो हम वहाँ पे वाई एक्सिस के लिए भी डाल के देखते हैं कि 0 कॉमा मतलब 0,4 से कौन सी इक्वेशन पास करेगी, राइट? सो इस तरह से हम देख सकते हैं. दिस इज़ अ ईजी वे, आपका टाइम कम लगेगा एंड आप इजीली देख सकते हैं. कोई भी लाइन की इक्वेशन हो, सबसे पहले हमें यही चेक करना चाहिए कि वेयर इट विल कट एक्स एक्सिस एंड वेयर इट विल कट वाई एक्सिस. सो उससे काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं सॉल्व करने में. So now we will move towards another example, which is example number C. It has 4 equations. First is x plus y equals to 0, then y equals to 2x. Third equation is y equals to 2x plus 1. And fourth equation is y equals to 2x minus 4. Right, and my figure is, थोड़ा मैं छोटे फिगर बना देता हूँ. So it says this point is 0 comma -4. This point is, this is my x axis, this is my y axis. This point is 2 comma 0. And एक और पॉइंट दे रखा है यहाँ पे which is -1 comma -6. फिर से वही अप्रोच देखेंगे. हमें पता है एक्स एक्सिस को 2 कॉमा 0 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को 0 कॉमा -4 पे कट कर रही है. तो हम पहले इस बार देखते हैं कि ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, राइट? ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0, राइट? सो इसमें अगर मैं y को 0 डाल देता हूँ सो x विल कम आउट एट 0. सो ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ, x2 आना चाहिए मेरा, राइट? इस इक्वेशन में अगर मैं डाल देता हूँ, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गई बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx, राइट? दिस विल पास थ्रू ऑरिजिन, और ये तो ऑरिजिन से लाइन पास नहीं हो रही, राइट? सो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया. हम इस पे आते हैं, y इक्वल्स टू 0, राइट? Subtracting 1 from both the sides, so x come out as -1/2. ये भी एलिमिनेट हो गई, x तो -2 आना चाहिए. सो बिना देखे मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सोल्यूशन है, राइट? सो दिस इक्वेशन इज
y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। अब डाल के भी देख लेते हैं, 2, 0 को यहाँ पे डालता हूँ तो क्या सेटिस्फाई होगा। सो हेयर y इक्वल्स टू 0, 2 times x minus 4, right? Adding 4 on both the sides, dividing by 2, so it will give me x equals to 2, correct? इस वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको या फिर नहीं। So we have y equals to 2x minus 4, right? Here I'll put x equals to 0, 0, y equals to 0 minus 4, which is minus 4. So this satisfies, right? हाँ, ओके। सो एक्सरसाइज पे अब आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज 4.3। ओके, so thank you for watching, and yeah, please like, share and subscribe this channel.